Last night, Delhi's Alipur area was engulfed in a massive fire that broke out around 5 p.m. A paint factory running in the highly congested residential area caught fire, resulting in the painful death of 11 laborers. Even though fire tenders were rushed to the spot, it took over 4 hours to bring the fire under control, as per the fire services. The Director of Fire Services, Delhi, has been giving regular updates on the search and rescue operation, while the Delhi Chief Minister also visited the area to take stock of the situation. Let's in fact listen in. 5:25 पे हमें कॉल मिली थी कि फैक्ट्री में फायर है। हम लोगों ने शुरू में 5 फायर टेंडर भेजे थे नियर बाई से, बाद में पता लगे पेंट फैक्ट्री है। ये टाइम जो था, आप अगर देखें तो ये बहुत पीक आवर टाइम होते हैं, तो पास की गाड़ियां तो पहुंच गई थी, दूर से जो गाड़ियां हमने भेजी थी और थोड़ा जीटी रोड करनाल रोड पे जो था पुलिस सेक्शन भी दूसरे से भी थोड़ी सी जो बाकी बैकअप था थोड़ा लेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो एक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग गिर गई और आसपास के जो घर थे, सड़क के उस पार जो घर थे, उनमें भी आग लग गई। जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। और जो भी इसके लिए दोषी है, उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। Well, both the Director of Fire Services and the Chief Minister of Delhi have highlighted a permanent issue in their respective statements. Arvind Kejriwal says that fire services were delayed in reaching the spot and he will look into the matter. The fire department claims that it sent 5 trucks to the spot immediately to bring the fire under control, but the backup trucks that were deployed got stuck near the GT Karnal Road, without mentioning what's actually happening at GT Karnal Road. The Fire Services Director says there were directives of the cops due to which the backup got delayed. 11 people were killed, 4 were injured, and properties of those around the factory have been destroyed. While the Chief Minister of Delhi has announced ex gratia of 10 lakh rupees for the kin of those killed and promised action against the culprits, the circumstances beg us to ask if the culprits of the fire in Delhi are only those who are running a dangerous paints factory in a highly congested residential area. The fire trucks were stuck at GT Karnal Road, where the farmers are protesting, resulting in the delay of crucial services, which today has contributed to the deaths of 11 people in Delhi. Maybe if the fire trucks had reached the spot on time, some of these lives could have been saved. So while the owners of the factory need to face prosecution, what about those who in the name of protests are delaying access to life-saving services? That's a big charge against them. Let's in fact listen in to the horrific experience of some of the victims. थी गेट पे ही मैडम, क्योंकि दुकान शॉप मेरी थी, मैं ही बैठती थी। मैंने तो सारे दिन सिलाई करके दुनिया के कपड़े सिल कर रख रखे थे। मेरे बेबी सिर हो गए, मैं कहाँ से दूंगी उनको? इसको लेकर मैं भागी, मैं इनको बचा कर ला। वो छोटी पोती मेरी देख वो रही, उस दूसरे की छत पर से लेकर भागे हैं। मैं एक बार पहले भी या पता ना किस चीज की थी, यहाँ पे सील लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा चालू हुई है ये। हमको लड़का, आपके लड़के फंसे हुए थे? हाँ। तो अभी उनसे आपका संपर्क हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं भैया। हमको रात से हम अब नहीं बचेंगे बेटा के चलते। हमको बेटा जाले न मिलेगा, ताले हमको कोई सबूर न मिलेगा। अधिकारियों ने कुछ बताया आपको? कुछ नहीं बताया, कुछ भी न बताया, कुछ बातचीत नहीं हो पाया? नहीं। Cut across to my colleague Aditya Kumar, who's in fact at the exact location where this horrible tragedy transpired. Aditya, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आदित्य? आदित्य कुमार, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। आदित्य, आप बताइए, आप किसके साथ हैं और क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? सभी जानते हैं कि ये फायर ब्रिगेड देरी से क्यों पहुंची। 11 लोगों का निधन हुआ है इस दुर्घटना की वजह से। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि इसकी तह तक पहुंचेंगे, पर सभी जानते हैं कि थोड़े दिनों में ये सारे ही राजनेता इस बात को भूल भाल जाएंगे। जी, असल में जब घटना ये हुई थी, शाम का समय था और सरस्वती पूजा जब चल रहा था, उसका भसान जो यानी मूर्ति विसर्जन का समय था, उस वक्त ये घटना हुई थी। और जब ये घटना हुई तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर 2 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी। किसी को अंदाजा
नहीं था कि इस तरीके का जो घटना है यहाँ पे हो जाएगी। और अभी जब मैं मौजूद हूँ वहीं पर ये घटना हुई थी, और ये आप देख सकते हैं कि संकरी गली है, पूरी पूरी जो गली है बहुत संकरी है, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं वो बहुत ही चौड़ी और बहुत वजनी होती है। इस वजह से यहाँ आने में एक जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां थी वो आने में देर हुई इस वजह से, क्योंकि लोग यहाँ पे ये जगह ही नहीं इतनी थी यहाँ पे कि गाड़ी आई जा सके और आग को काबू में लाया जा सके। अच्छा, आग 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 जब भयावह रूप लेती चली गई, क्योंकि जो केमिकल्स जो है नालियों के द्वारा जो है अगल बगल के क्षेत्र में, अगल बगल के जो पूरे क्षेत्र है उसमें जाने लगे, और उस वजह से जो है आग और फैलता चला गया। मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आपसे बात वो डिटेल बता पाएंगे कि कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। कैसे आग लगी थी, क्या हुआ? भाई वो अंदर कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा था, उससे वो थिनर वगैरह था उसके अंदर में, उससे वो आग फैल गई और जो है ब्लास्ट हुआ, और वो जो ड्रम फट गए और वो सब केमिकल नाली में बहने लग गया, और जो है जबरदस्त आग लग गई। और आग बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड गाड़ी आने में देर लगी। वो बढ़िया रहा, लेट आई तो, अगर जो जल्दी आ जाती तो शायद और भी ज्यादा आग बढ़ जाती, क्योंकि केमिकल जो है ना पानी के ऊपर तैर रहा था, और वो आग जो है पानी के ऊपर और ज्यादा फैल जाती। तो फायर ब्रिगेड तो सही टाइम पे ही आई है, जल्दी आ जाती तो शायद और ज्यादा नुकसान होती। तो जैसा सुन रहे हैं आपकी किस तरीके से जो यहाँ पे दिक्कतें थी कि आग बुझाने में जो पानी इस्तेमाल करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि केमिकल से आग लगी थी, और केमिकल आग लगने के बाद जो है केमिकल पानी पे तैर रहा था, तो कोई खास फर्क उसका दिखाई नहीं दे रहा था। एक बच्चा हमारे साथ में है, जो बच्चा शुरुआत से ही घटना के समय मौजूद था। क्या हुआ था बताओ जरा। हम पेपर देने गए थे, मतलब तो हम यहाँ आए, जैसे यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था, ये अंकल बता रहे, सही बता रहे हैं, केमिकल इस साइड से होके पूरे दुकान सबको अंदर से कुंडी मार के कर लेते, तो जो भी मौजूद थे सबको मतलब निकल नहीं पाए, सब आधे लोग मर गए, आधे लोग घायल है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ये सब आई, फिर मालिक भी मर गया, सब मर गए। यहाँ नाली के ऊपर केमिकल हो, मतलब नाली पे जो केमिकल तैर रहा था ना, जैसे 4-5 घर से पेट में आए हैं, और अगर जो शायद उसी टाइम अगर जो फायर ब्रिगेड आ जाती ना, तो ये पानी हमारा जो ना फायर ब्रिगेड आने भाई यहाँ तक आ गया था, तो केमिकल तो हमारा यहाँ तक आ जाता, फिर तो आग इधर भी फैल सकती थी। ये तो मौके पे जो है थोड़ी लेट ही आई तो बढ़िया रहा, और नहीं तो ये सब मकान जो और भी ज्यादा चपेट में आ जाते, क्योंकि पानी पे तो केमिकल तैर रहा था ना भाई। नाले में पानी चल रहा था, तो फिर कुछ कुकर फैक्ट्री वाले लोग है ना, नाले में मिट्टी डाल के वो कर रहे थे, रोक रहे थे, आगे नहीं जाए पानी में वो तेल। वो तो बेटे गलत करा उन्होंने। ये जैसा आपने सुना कि जो नाले का जो पानी था वो बहता हुआ जहां जहां जा रहा था वहां जो है आग लग रहा था। मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से जो लोग है भीड़ अभी भी तमाशबीन बने हुए हैं, क्योंकि अब आग बहुत बड़ी घटना लेकर के आया था। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आग अगल बगल की दुकानों में, अगल बगल घरों में जो है वो फैल चुका था, और पूरा जो बर्बाद हो चुका है, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है बर्बाद हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं मात्र मैं 10 फीट की दूरी पे हूँ जहाँ घटना हुई थी, जहाँ आग लगी थी। और इस तरीके से स्थिति जो थी ये है। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आग लगी थी। कि ये एक दुकान थी किताब की, जहाँ पर ये लोग जो हैं बच्चे उस वक्त किताब खरीदने के लिए आए हुए थे, और जब आग लगी तो फिर यहाँ से भाग करके लोगों ने, बच्चों ने अपने जो है जान बचाई, और उसके बाद ये भयावह स्थिति थी। जी, Alan Rao, former DCP Special Cell, also with us to talk more about this. Advocate KV Dhananjay, senior lawyer of the Supreme Court, constitutional expert, also joins us at this point in time. My colleague Ayush Sharma is also there with us at this point in time. I'm going to cut across to him. Ayush, कहाँ हैं आप, और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वाकई कि अगर ये फायर टेंडर पहले वहाँ पहुँच जाता तो क्या इन लोगों की जान बच पाती? 11 लोग मौत के घाट उतर गए इस दुर्घटना की वजह से। अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन का या फिर इन बैरिकेड्स का जिक्र तक नहीं किया। आयुष, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आयुष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वो हम we'll sort that out. But let me in fact quickly rope in Advocate KV Dhananjay into this conversation as well. Advocate Dhananjay, you know, this is appalling. You know, this is something which obviously falls under the ambit and the purview of right to life. You know, it's also very complicated and, you know, topsy-turvy as to who should be held responsible for this, who should be sued.
Is it the government that hasn't made provisions within 3 kilometers of any resident to have access to a fire brigade? Is it the farmers, who have put up these rampant and these barriers across the national capital, because of which the tenders got delayed? Is it the person responsible for running this factory because he did not obtain an NOC to run this factory by the fire department? There are so many overlaying transgressions over here that it's really, really hard to pinpoint whom to blame. Well, all of them will take responsibility. And first of all, my heart goes out to the victims in this tragedy. This was entirely avoidable. The tragedy was avoidable. There is no doubt about it. Because we, over the last 300, 400 years, our fire services, both in India and then outside, we've advanced so much that with some more efforts, I'm very sure that we could have minimized the loss of life here. Having said that, the other aspect I would like to point out is the protesters. No doubt, it's important for the government to take note of protesters and then to make sure that if there is going to be a protest, then the protesters will in fact made aware of when they will have to give way to, and that when an ambulance or a firefighting vehicle is on the way, then the protesters will have to simply give way to it. And that requires the government to take protesters into confidence and then to, either persuade them to give way or alternatively to force them to give way. Who's to be pinned for this particular tragedy? In fact, some of these bodies were in such a condition, so charred that recognizing them was impossible. They have been sent for an official biopsy and perhaps dental recognition patterns to figure out who's who. Mr. L.N. Rao, former DCP, Special Cell, also with us on the program. Mr. Rao, obviously the police is doing their job. They're trying that, this farmer menace does not spill into the city. But when it started to result into the loss of lives and inconveniencing those people, innocent people who have nothing to do with their agenda, what should be done here? 11 people dying, even one person dying because of this kind of a delay and procrastination is inexcusable. Yes, definitely it's inexcusable, and our heartfelt condolences to the persons who have died. This is really unfortunate condition in Delhi at the borders, because of which that all over in Delhi, on the most part of the Delhi near the borders, traffic is so congested, and the fire brigade tenders could not reach there on time, maybe because of this agitation. So these agitators should also they are also responsible for this. Is one of the reasons. Another reason that it has been reported by your reporter that the narrow lanes, at the time when these colonies are constructed and built up, then that the civic authority must see that the narrow lanes should not be blocked, and the lanes should be sufficient to move, because that incident of fire can happen anywhere, everywhere, anytime. So this should be presumed that if there is some fire broken into, then the fire brigade tenders should reach the spot in no time without any hindrances. So these are the reasons, and that for the police should have been retaliated at the time when these. All right, well, there seems to be a problem with that connection, but the Alipur blaze is something which is not only tragic, it also needs to be probed. There needs to be an introspection done by a multiple number of agencies and parties, including political parties, to understand how this could have been avoided. Let's listen to these reactions that came in. 5:25 पे हमें कॉल मिली थी कि फैक्ट्री में फायर है। हम लोगों ने शुरू में 5 फायर टेंडर भेजे थे नियर बाई से, बाद में पता लगे पेंट फैक्ट्री है। ये टाइम जो था, आप अगर देखें तो ये बहुत पीक आवर टाइम होते हैं, तो पास की गाड़ियां तो पहुंच गई थी, दूर से जो गाड़ियां हमने भेजी थी और थोड़ा जीटी रोड, करनाल रोड पे जो था पुलिस सेक्शन भी दूसरे से भी थोड़ी सी जो बाकी बैकअप था थोड़ा लेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो एक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग गिर गई और आसपास के जो घर थे, सड़क के उस पार जो घर थे, उनमें भी आग लग गई। जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी
इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। 5 Right, going back to Mr. Rao. Mr. Rao, the Chief Minister is saying that, just putting out a statement like the fire brigade came late is irresponsible. Why was it delayed? He hasn't mentioned that. It's because of the farmers' protest. Mr. Rao? Yes. So the Chief Minister went on to make a statement. He went to this colony in what appears to be optics of a politician, and then went on to say that, the fire brigade came late. That's a misdirection. The fire brigade was late because of a particular reason. Yes, fire brigade is also under him, and this seems to be the only political statement by the Chief Minister. He should have felt it that because of this Punjab agitators, this is the main reason in this incident, I think so. And only a routine statement like any politician he has given that we have announced such and such. What will happen to the persons who have lost their life? What will be the family of these persons, victim families? What will they do? That's only giving a statement like any politician will not suffice their lives, and they will not be their life cannot be resumed for that. And it is not only this case. There are so many other cases also have seen in the past, and I think they have not learned any lesson about it. Only ex gratia payment is announced, and that's all over that. After that, the inquiry and the investigation is not complete, and they are not going into the bottom of the reasons, and those reasons are not corrected. The corrective measures should be taken so that in future no lives are wasted like this, no lives can go like this. So the agitators as well as the other agencies who are concerned and who are responsible, who appears to be responsible for this tragedy, they should, I think they will be investigated, and then appropriate legal action will be taken against all of them who are involved in this case. Right. Advocate Dhananjay, what is the recourse for the victims here? Perhaps a lot of them come from backgrounds where they do not understand the rights they have, the responsibility that they can exercise in employing the law to act against some of these agencies and politicians who are responsible for these lapses. Well, they already have the recourse to go to a court and then to sue the employer primarily, and then to recover, compensation and damages and all that. But that would take a great deal of time, and I probably assume that the victims, the family members of the victims who were killed here come from the lowest strata of society. So it's nearly ruled out. I mean, it's a different thing that on paper we have so many legal remedies available, but in actual practice, I don't think it is really feasible. So whatever compensation the government has announced, I think will be a life-saving measure right now. And it's also unfortunate that most often these grand announcements don't translate to paper and then action on the ground immediately, because we've come across reports where so much of these kinds of compensations don't reach the persons for whom. All right, this seems to be a problem with that connection. We're going to listen to more reactions that came in earlier. गेट पे ही मैडम, क्योंकि दुकान शॉप में थी, मैं ही बैठती थी। मैंने तो सारे दिन सिलाई करके दुनिया के कपड़े सील कर रखे थे। मेरे बेबी सिर हो गए, मैं कहाँ से दूंगी उनको? इसको लेके मैं भागे, मैं इनको बचा के ला। वो छोटी पोती मेरी देख वो रही, उस दूसरे की छत पर से लेकर भागे। मैं एक बार पहले भी या पता ना किस चीज की थी, यहाँ पे सील लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा चालू हुई है ये। हमको लड़का, आपके लड़के फंसे हुए थे? हाँ। तो अभी उनसे आपका संपर्क हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं भैया। हमको रात से हम अब नहीं बचेंगे बेटा के चलते। हमको बेटा जाले न मिलेगा ताले हमको कोई सबूर न मिलेगा। अधिकारियों ने कुछ बताया आपको? कुछ नहीं बताया, कुछ भी न बताया। कुछ बातचीत नहीं हो पाया? नहीं। 5:25 पे हमें कॉल मिली थी कि फैक्ट्री में फायर है। हम लोगों ने शुरू में 5 फायर टेंडर भेजे थे नियर बाई से, बाद में पता लगे पेंट फैक्ट्री है। ये टाइम जो था, आप अगर देखें तो ये बहुत पीक आवर टाइम होते हैं, तो पास की गाड़ियां तो पहुंच गई थी, दूर से जो गाड़ियां हमने भेजी थी और थोड़ा जीटी रोड करनाल रोड पे जो था पुलिस रिस्ट्रिक्शन भी थी, उस वजह से भी थोड़ी सी जो बाकी बैकअप था थोड़ा लेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो एक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग गिर गई
और आसपास के जो घर थे, सड़क के उस पार जो घर थे, उनमें भी आग लग गई। जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। यही थी गेट पे ही मैडम, क्योंकि दुकान शॉप में थी, मैं ही बैठती थी। मैंने तो सारे दिन सिलाई करके दुनिया के कपड़े सील कर रख रखे थे, मेरे बेबी सिर हो गए। मैं कहाँ से दूंगी उनको? इसको लेके मैं भागे, मैं कहीं इनको बचा गया। वो छोटी पोती मेरी देख वो रही, उस दूसरे की छत पर से लेकर भागे हैं। मैं एक बार पहले भी या पता न किस चीज की थी, यहाँ पे सील लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा चालू हुई है ये। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.